Warm welcome to all the audience on ICSI YouTube channel. And this YouTube channel is for giving an insight for making education relevant and various aspects of education ecosystem and what all we can do to make education relevant, to make all the stakeholders within the education ecosystem come on a common platform, share their views, get the idea, collaborate with each other, and can do something for the betterment of education and the society and the learners. And then that we are also focusing on preparing global educators, because nowadays the entire education ecosystem is not just limited to boundaries, but it has gone globally. It has become a global learning platform, a global learning family, and a global learning hand-holding system. So there are a lot many topics that we have discussed, and we used to discuss these small topics and these small initiatives from Monday, Tuesday, and Wednesday. And then we on Thursday we meet the trainers from MEPSC, Management and Professional Sector Skill Council, and then on Friday we have some kind of an idea, some kind of an intellectual mindset, some views from the women educators, the females, those are in the education ecosystem, motivation, inspiration, digital learning, and technology-driven areas. And then Saturday, we go for, first of all, to the Ayurveda for global wellness, and then we go to Northeast India and talk about the education, educators, and youth empowerment in that particular region, that beautiful region of India, Northeast India. And then on Sunday morning, you see Vidya Se Adhyatma Vidya Cure, and the week ends with the NRI talk on new avenues for global educators, wherein how to bring new things in education ecosystem to make it relevant and make it interesting, creative, innovative. So because today is Monday evening, the very first day of this week, I thought I should give you a glimpse of what we have planned for the entire week. And then I'll begin with today's topic, the habit of learning. This is looking like a very simple thing, that we have to inculcate the habit of learning. But there are a lot many things when we go in deep inside into it, especially from the point of view of educators, especially from the point of view of education, institutes, education, colleges, schools, universities, wherever the learning is happening, and the educators and the teachers, the professors, they are giving the education. Because nowadays, the time not for the contemporary form of learning or the traditional learning, but personalized learning is also coming. So making our youth, making the not just the youth, not just the student, but making the teachers also self-learner and continuous learner and lifelong learner. It is very important to have a habit of learning. Now, why is it important? How can we do that? What are the key things in that? What to look into? There are a lot many things. When you go to search it out, when you go to read it out, you will get lot many things in that. But now, why I am showing you the very first slide is because I am giving you the crux, the key of what I'm going to cover in today's particular webinar, and all the slides that I'll be going to show you. Yes, I know, because few of my viewers on YouTube Live,
They are writing that, ma'am, we are only seeing your first slide. Yes, everyone, I want to tell that before moving ahead, I would like to give you a very brief introduction of why we have chosen this topic today, the habit of learning. So let's go and let's find what all things we should keep in mind while we are developing this habit, and why is it important, and what to bring. What I'm trying to say is there are a lot many things when you go online and you search, you will get, but what best I can give you tomorrow, give you today, is a few slides that I am going to show you. And I'm not saying that this is the only thing where you have to focus when you are doing habit of learning, but there are a lot many other things also. But the key things that I must tell all of you today, all my lovely viewers, that you should hold when you are forming a habit of learning, that you see, and then that you have to inculcate in you, that you have to keep in mind. So just be with me for another 1 hour to just listen to what is the habit of learning. To start with, once again, ICSI welcome everyone, making education relevant and all the global community. And this particular series is specifically to provide a platform wherein the educators, the teachers, those who are watching our program, and the students, those who are watching our program, they can become the global companion, the global citizen, and the global teachers, the educators, because these things, when we refer in general and in specification, is not just applicable to one part or the one region of education, but it is applicable to the entire globe. So just get to know about it, and just let even the minutest thing, if anything you can grab out of it, that will be beneficial, and then that will solve our purpose. So first of all, let's see, when we talk about habit. So habit, how to make the habit. And once again, I would like to tell, because I want that this conversation, these things that I'm showing you, and the things that I'm going to tell you should go to masses. And to reach it to masses, I have to go in a dual language form, like Hindi and English. So in between, I'm talking in English also and in Hindi also, so that you can understand what I'm trying to say, and it can reach us to masses, and you can grab something out of it. So शुरुआत करने के लिए we can have a habit loop. And when we say habit loop, the three things is coming. जब भी कोई habit बनानी होती है, तो वो क्या है कि there's something to start. There's some triggers should be there. Then you take an action, then you will get a reward of that action. And when you get a reward, your mind sees that, wow, this activity is giving me this reward, I have to repeat it. And then you repeat it once again, and then it comes, and then you repeat it, redo it, and then it becomes your habit. So this is basically what the researchers, the journalists, the socialists have to say about the habit loop. If you want to change your habit, आप अगर अपनी कोई भी आदत को बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो इन चीजों का आप प्रयास कीजिए. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. If suppose there is a debate in your school, if you are a student, because हम education point of view से बोल रहे हैं, there are a lot many examples, but मैं एक छोटा सा example आपको एक education background से ही देना चाहूंगी. Suppose there is a debate in the school and the college, anywhere, और आप डिबेट्स और कॉम्पिटिशंस में इस तरह से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, और आपको कहा गया कि आपने इस बार बोलना है, और आपने उसकी बहुत तैयारी की, आपने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया,
और वो ट्रिगर आपको मिल गया. ट्रिगर क्या है? दैट देयर इज अ कंपटीशन एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट. सो यू गेट द ट्रिगर, यू गेट द क्यू, and from there you start your preparation, and then the day come. और उसके लिए जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तैयारी पूरी आपने की, you got into the action, and the day come, और आपने उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट किया, तो यू विल गेट अ पॉजिटिव फीडबैक. मे बी हो सकता है कि आप नंबर 1 स्पीकर भी चुने जाएं, and you will get some kind of a reward or appreciation from your principal, from your teacher, or your peer mates. So that will definitely give you a boost, a confidence. And whenever next time such thing happens, आप ऑटोमेटिकली अपना नाम देंगे और आप चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं और मैं इन चीजों में पार्टिसिपेट करूं. तो वो धीरे धीरे फिर आप जब उसको रिपीटेड कर जाएंगे तो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा, और आप उसको इंजॉय करने लगेंगे, और आप उसको एक आपकी लाइफ का, आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा. जिस तरह से हमारे डेली, जो हम जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं से लेकर रात को जब हम बेड पे जाते हैं, तो उस दौरान हम जितनी एक्टिविटीज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमारी डेली हैबिट्स हैं, डेली रूटीन है, वो क्यों है? बिकॉज देयर इज अ पॉइंट जब हमने उन्हें स्टार्ट किया और उस पे हम इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया, और वो कॉन्टिन्यूटी का पार्ट बन गया. चाहे वो हमारा ब्रश करना हो, चाहे वो हमारा ड्रेसअप होना हो अच्छी तरह से, चाहे वो हमारा स्कूल कॉलेज जाना हो या खाना बनाना हो, व्हाटएवर. सो इतनी माइन्यूटली अगर आप हैबिट को समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हैबिट किस तरह से डेवलप की जाती है ना. ग्रोथ हैबिट्स की भी एक, अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ हैबिट्स लिखी हैं, जैसे फोकस ऑन पॉजिटिव एंड यू विल हैव मोर ऑफ दैट. हमेशा पॉजिटिव चीजों पे आप फोकस कीजिए, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. परस्यू लर्निंग डेली. If you don't like something, change it. If you can't change it, accept it and move on. Read, watch, or listen to something inspiring each day, even if it's just an inspiring quote to reflect upon. So these are the growth habits, and this is the habit loop to begin with. Now, अब हमें ये समझना है कि हम हैबिट को लर्निंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. हैबिट ऑफ लर्निंग. सो लर्निंग कहाँ होती है? लर्निंग इज इन आवर माइंड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे माइंड की क्या हैबिट्स हैं. और बिलीव मी, दिस वन स्लाइड इज इनफ. This one slide is enough to complete today's webinar. Though I have more slides to show you, but I can say this very confidently कि अगर हम इस स्लाइड को, जो आपके सामने ये 16 पॉइंट्स लिखे हैं, आप अभी जो जब सुन रहे हैं मुझे लाइव, थैंक यू वेरी मच. और बाद में भी आप जब भी इसे सुने, just think on it, just go through it once, twice, and when you got to know these things, na, you automatically will believe into what I'm saying, that this one slide enough to tell us what is learning habit. So हमने अभी हैबिट के बारे में जाना, और अब हम माइंड की हैबिट के बारे में अगर हम देखें तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा, इसमें बहुत कुछ है. एंड देयर लॉट मेनी थिंग्स. आप खुद सोचिए कि दिन में कितने थॉट्स हमारे दिमाग से गुजरते हैं, और इसमें बहुत कुछ है. तो इसको अगर हम प्रोडक्टिव रखेंगे, इसमें हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ ना कुछ नई चीजें डालते जाएंगे, तो ये हेल्दी माइंड रहेगा. और माइंड की हैबिट भी है कि ये परसिस्टिंग है. कुछ भी चीज आप इसको दो, कोई टास्क आप इसको दो, तो ये हमेशा उस पर फोकस रहता है जब तक कि वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए. और अगर हम उसे कभी ना कभी, ये आप देखिएगा, कभी ऐसा हो कि आप कोई टास्क कंप्लीट ना कर पाओ, तो दिमाग के किसी कोने में आपको सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये ख्याल बना रहता है कि वो चीज हमने करनी थी और हम वो कर नहीं पाए. और शायद कई लोगों का ये भी होता है कि जब हम उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की हैबिट है, हमारे माइंड की हैबिट है परसिस्टेंस की. देन मैनेजिंग impulsivity, and वो सोचता है, gives time to take an action thoughtful and deliberatively. और ये हमारे दिमाग की हैबिट है, और अगर हम इसको परस्यू करें तो that will give us a
positive after effect, positive feedback. And also listening with understanding and empathy, thinking flexible, thinking about your thinking. So it keeps on thinking and striving for accuracy. So we all, our mind has that habit to strive for accuracy in questioning and problem posing, applying past knowledge to new situations. When I'm reading all these points, when I'm telling you these things, there are, every point has an example which actually tells that whatever here it is written about the habit of mind, that is completely true. And that is why mind is always into learning new things, into developing, into creative thinking or continuous thinking, or getting to know what we are knowing and then applying into it new situations and gather data about all senses, creating, imagining and innovating, responding with wonderments and awe's. बेसिकली ये स्लाइड हमें ये भी समझाती है कि हमारा दिमाग ना केवल क्रियान्वित है। मैं दोनों लैंग्वेज में बात करना चाहूंगी ताकि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी जो बात है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे जो भी सुन रहे हैं। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा क्रियान्वित है और गतिशील है, और जिसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव है एंड कॉन्टिन्यूटी में हमेशा रहता है। इट इज जस्ट दैट हाउ मच वी यूज इट, how much we have a habit to use our mind, because common sense is common but the use of common sense is not common. So ये भी हमें चीज सिखा दी है, when we develop a habit of learning ना, we actually feeding our mind, actually giving some positivity to our mind to think, to react, to understand, to implement and to grow with the time. So जैसे कि पॉइंट नंबर 12 बता रहे, रिस्पॉन्डिंग विदाउट वंडरमेंट एंड ऑल। सो बेसिकली हमारे माइंड की टेंडेंसी है दैट वो हमेशा हैप्पी रहना चाहता है। वी आर हैप्पी, वी आवर माइंड इज एक्चुअली हैप्पी। तो अगर किसी की सिचुएशन खराब भी होती है और कुछ भी अगर कुछ उसको एक अच्छा सा फीडबैक मिल जाए तो वो मूड हमारा बिल्कुल सही हो जाता है यार, हम पुराने अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। दैट्स why because our basic tendency is of happiness. And then taking responsible risk, finding humor, thinking interdependently, not just depending on oneself, intradependent but interdependent. That means working in a teamwork, working together, working with everyone. And then remaining open to continuous learning. The 16th point बहुत ये बिल्कुल लास्ट में क्यों लिखा गया, क्योंकि यही हमारी आगे कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करता है, that our mind has a habit of continuous learning. So मैं आप सबसे जो दर्शक देख रहे हैं, आप इन 16 पॉइंट्स को जब जितना आपका समय लगे, जब आपको अच्छा लगे, आप इनको यू प्लीज गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स वंस अगेन एंड आप ये देखिए कि दीज आर द हैबिट्स ऑफ आवर माइंड। सो हमारे माइंड में कितना कुछ है एंड हमें उसको कभी भी सिर्फ बंद करके नहीं रखना है, और उसको इट हैज अ very powerful spirit in that. Mind has a very powerful spirit in that. So we have to use that. और ये सारी चीजें, ये सारी हैबिट्स बताती हैं कि बेसिकली अ पर्सन शुड बी हैप्पी, एनर्जेटिक, क्रिएटिव, इनोवेटिव एवरी टाइम। आप अगर अपने दिमाग को अपनी दिमाग की हैबिट्स ही सुन लेंगे, उसको ही ग्रो कर लेंगे, तो आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। सो दीज आर द हैबिट्स ऑफ माइंड। सो फर्स्ट हमने अभी हैबिट्स क्या है वो समझा, देन हैबिट्स ऑफ माइंड। नाउ जब हम इन हैबिट्स को ग्रो करेंगे, जब हम इन हैबिट्स को कल्टिवेट करेंगे और इनको सप्रेस नहीं होने देंगे, इनको उजागर करेंगे, इनको और डेवलप करेंगे, देन great things will come, because great things never come in the comfort zone, and comfort zone से बाहर निकलना पड़ता है, and that's why we should have the habit of learning. So in general, if I say what are the habits of learning,
So learning की habits क्या है? That it is when if you are learning and it is in your habit, so you are always inquisitive. आप हमेशा इंक्वायरी करेंगे, क्यूरियस रहेंगे, and you are always wondering whether you are in your school or in your workplace. This is for everyone. It is not just for education. It is not just for one profession. As I say, whatever I show, it is applicable to all the profession, but specifically we are talking about education ecosystem, but then it is applicable to your education area, to other workplaces also. Same ways, if you have a learning habit, so आपकी habit है, if अगर आपकी लर्निंग हैबिट है तो आप एक्सप्रेसिव हैं, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एंड आप अपने बिलीव्स को, अपने सिस्टम्स को बहुत अच्छे से बता पाते हैं, एंड देन यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग, यू हैव कोलैबोरेटिव माइंडसेट, एंड देन यू कैन ऑर्गेनाइज also very well things, मतलब अपने goals, अपने plans, अपने time को, इवन जिन जिन लोगों की लर्निंग हैबिट्स होती हैं, दैट उनकी हैबिट में ही लर्निंग शामिल है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, ज्यादा लोगों से बात करने के लिए, और हर चीज को कुछ नया सुन लिया, कुछ नया देख लिया, कुछ नया पढ़ लिया, कुछ नया सामने आ गया, तो उसको एनालाइज करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसको कंक्लूड करना, मीन्स उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के लाना, और सबको साथ लेके चलना, और अपनी चीजों को बहुत ही सुचारू रूप से करना, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करके चलना, ये सब ऑटोमेटिकली उनमें शामिल हो जाती हैं. सो दीज आर द लर्निंग हैबिट्स. एंड ऑल्सो इफ यू हैव लर्निंग हैबिट्स, तो बहुत अटेंटिव होते हैं, बहुत फोकस होते हैं वो लोग टुवर्ड्स माइन्यूटेस्ट ऑफ थिंग्स एंड टुवर्ड्स देयर टास्क. They are totally involved into, अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे तो आप अपने क्लास में इनिशिएटर होंगे towards asking questions, towards giving ideas in the group discussions and other activities. And same goes for अगर आप अपने वर्क प्लेस पे भी हैं और आप में लर्निंग हैबिट्स है, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हर डिबेट्स में, डेक्लेमेशन में, ग्रुप डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, और साथ ही अटेंटिव रहते हैं, और उसी के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी है. सो रिफ्लेक्शन किस चीज का? योर रिव्यूज एंड थिंकिंग अबाउट योर एक्शंस एंड वर्क यू प्रोड्यूस विद द पर्पस ऑफ लर्निंग मोर. सो यू ऑलवेज check what you are doing, not just keen to learn from others, but you are also seeking that what you are doing, how much they are productive, how much your actions are productive, what more needs to be added. These all, if all these habits are in you, then you are a learner, you are a continuous learner, you are a self learner. Or agar nahi bhi hai, to I will say this to everyone, that start having some or the other qualities in you to become a self learner or a lifelong learner, or having a habit of learning. And again, as a habit of learning, whether in a school, whether in a college, whether in a working place, you always are persistent. Perseverance is there. So you never say no, or you never get you always try. You never say कि ये चीज नहीं होगी. अगर कोई चीज नहीं भी हो रही है, तो आप उसे तब तक करते रहेंगे जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती. So you always try. So that is also a habit of learning. Now, my main motive to show you the habits of learning is just to tell that when we say that making learning a habit, why it is important, because we need to grow in life. And we need to grow in life. If you need to grow in life, it is not only dependent कि आप एक स्कूल में जाकर और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बैठ के क्लासरूम में और एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो
करिकुलम दिया गया उसको पढ़ के ही आप लर्न कर सकते हैं। मेक लर्निंग अ हैबिट, कि आप कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, किसी से भी और किसी वक्त भी, व्हेन, वेयर, हाउ, इन एनी मैनर, व्हाटएवर, आप लर्न कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और जब आपकी ये आपकी हैबिट में, आपकी डेली रूटीन में, आपकी एक एक जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट एक्शन, हैबिट्स आर मेनी टाइम्स आवर रिफ्लेक्ट एक्शन, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन वैसे साइंस की टर्म है, समथिंग, इट्स समथिंग डिफरेंट, बट देन जो हो जाता है, जो हमने सोचा नहीं है, वो हमारे एक्शंस में ही इस तरह से आ जाता है कि हमारा वे ऑफ, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, हमारी स्किल्स, हमारे सेंसेस इस तरह के हो जाते हैं कि हम जहां भी जा रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, इवन एक लाइन भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप मान लीजिए आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपने गूगल पे कुछ नया पढ़ लिया या आज के दिन का कुछ नया सीख लिया, तो वो आपके, आप उसके बारे में और जानना चाहेंगे, आप उसको वो हमेशा आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और आप कुछ नया लर्न कर लेंगे, बिकॉज यू आर क्यूरियस, यू आर अटेंटिव, you are keen to know, you are much more involved and you want to know new things, so वो आपकी लर्निंग हैबिट में आ जाएगा। और धीरे धीरे जब ये चीजें आ जाती हैं तो यही सेल्फ लर्निंग की तरफ इशारा करती हैं, जो आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ट्रेडिशनल लर्निंग से ज्यादा जब हम बात करते हैं मूक्स की, जब हम बात करते हैं फ्लिप लर्निंग की, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग, तो वो क्या है, जब हमें टीचर कोई असाइनमेंट देती है घर के लिए और वो कहती है कि ये वीडियो देख के आइएगा, ये आपको मैंने कुछ स्टडी मटेरियल दिया है, केस स्टडी दी है, गो थ्रू दैट एंड वी विल डिस्कस दैट इन क्लास एंड I'll ask you few questions or you can ask me questions. So वो सब क्या है, वो सेल्फ लर्निंग का पार्ट है, वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग का पार्ट है, एंड दैट विल ओनली कम, आप उसको बोर नहीं समझेंगे जब वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपनी लर्निंग हैबिट्स में ला सकते हैं। अब ये तो सिर्फ कुछ पॉइंटर्स थे जो बताए गए हैं कि एज ए सेल्फ लर्नर, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में, वर्क प्लेस पे हैं, स्कूल्स में हैं, तो आप में क्या क्या ऐसी हैबिट्स है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि दीज आर द हैबिट्स ऑफ लर्निंग। नाउ द अदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर एंड अ स्टूडेंट, बिकॉज हमें ये भी देखना है कि जब हम ग्लोबल टीचर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जितना भी हम बात कर लें कि टेक्नोलॉजी है, एडवांस है, डिजिटल लर्निंग का दौर है, बट वो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है और जो वो सेटअप है, वो नहीं खत्म होगा। तो एज ए टीचर आप स्टूडेंट को लर्निंग हैबिट देने में किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम थोड़ा सा I'll show you a few slides onto that also, कि how a teacher, how important is it for a teacher to inculcate that habit of learning in a student, whether in the classroom environment, in the physical class, or in the online class, in the digital learning manner, or wherever, but how can teacher contribute towards that? So uh, whatever I have told you, it's the mental habits that support lifelong learning is risk-taking, humble self-reflection, that you are honest towards your success and failure, openness to new idea, careful listening, and solicitation of opinions. That means you are collaborative, you can discuss the ideas and opinions with other people, you are very social to share the ideas and to get the information and ideas from others. So this is also a mental habit of lifelong learning. Now, as a teacher, how the teacher personalized learning or inculcate the habit of learning for students and enable students to personalize learning for themselves. So how they can do is, there are 4 steps listed here. Developing students' personal competencies,
facilitating student directed personalization of learning, creating portraits and possibilities, and varying time, place, path, parts, and traits. So it is very important that teacher understand the skills and competency that their students holds. And then understanding their skills and competencies and getting to know what is a specific skill your student has, uh, with that skill, bringing the self learning or personalized learning habit into the student, that is very important. And then creating the possibilities to learn more, develop more competencies, and develop more skills uh, as per the availability, as per the time frame, as per the understanding the place, path and pace of the student. तो ये बहुत important चीज है जिसमें to develop the habit of learning or personalized learning, it is very important that teacher first should understand that what are the personal competencies of their student. Now, अभी मैंने बात की कि टीचर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका स्टूडेंट की जो स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो क्या है. सो हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ पर्सनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो जिसके थ्रू आपने देखा होगा क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका लर्निंग स्टाइल अलग है, सबका फोकस अलग है, सबका वे ऑफ लर्निंग अलग है एंड सबका इंटरेस्ट एरिया अलग है. और वो क्यों? क्योंकि सबकी स्किल्स, सबका माइंडसेट अलग है, सबका ग्रास्पिंग पावर अलग है और सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है. So if we want to divide essential repertories जो हैं, if we say, तो हर एक बच्चे में, हर एक पर्सन में ये 4 तरह की essential repertories कह लीजिए कि जो स्किल सेट्स हमने अपने अंदर जनरली होल्ड किए होते हैं. तो ये 4 तरह के स्किल सेट हैं. Number 1 is the cognitive, then is metacognitive, motivational competencies or skills, and then social and emotional skills or competencies. So ये चारों हमने पहले assess करने. As a teacher, it is very important, and not just for a teacher but for a parent also. But then parents need to understand that also. तभी आज का जो हमारा learning system है और जिसको हम कहते हैं education ecosystem, उसमें पेरेंट्स का भी एज अ इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. बिकॉज इन द स्कूल, इन द क्लासरूम, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर to understand the skill set of their student. Equally important is for the parents to understand the skill set of their child, or teacher can make them understand, so that बच्चे की लर्निंग, बच्चे की डेवलपमेंट ना केवल एजुकेशन या स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से हो और उसी सेट एरिया में हो, बल्कि जब हम बात करते हैं फ्लिप क्लासरूम की, फ्लिप लर्निंग की, तो वो घर के माहौल में भी हो या हर जगह जहां वो जा रहा है या जहाँ पे भी उसका वर्क प्लेस है या लर्निंग अरीना है वहां पे हो. तो ये 4 essential skills जो हैं वो समझने बहुत जरूरी है. एंड these skills converge in forming the student learning habits and pattern of behavior students exhibit in pursuing the learning goals. So इनके बारे में डिटेल में मैं आपको different slides में बताऊंगी. But before telling that, let's just talk about elements of learning process, because हमें learning को एक habit बनाना है. तो again ये चारों elements की बहुत जरूरी है. And when we say learning challenge, जैसा भी हमने पिछले slide में बात की कि हर एक बच्चे का एक mindset, skill set, understanding level, grasping level और focus level सबका अलग अलग है. तो उस हिसाब से वो क्या है उसको समझ के, when how cognitive competent they are, how metacognitive competent they are, motivational competence they are, and socio emotional competence competent they are, इसको समझ के उनकी learning habits को develop करना और उसके through
उनको उनकी स्किल्स को मैच करते हुए, जो वो पोजेस कर रहे हैं उन स्किल्स को मैच करते हुए उनकी लर्निंग हैबिट्स को डेवलप करना, और उसके बाद उनमें और नई स्किल्स डेवलप करना, ताकि वो अपनी उस फील्ड में, अपनी लर्निंग में उसमें मास्टरी कर सकें. दैट इज द entire process. So very first thing is identifying the challenges, then seeing out of the 4 competencies what is the basic competency of the child, and then developing, matching those skills, learning habits को develop करना, और उसके बाद learning habits को develop करते हुए बाकी और जो स्किल्स हैं वो उनके उसमें डेवलप करना, एंड देन वो डेवलप करने के बाद ताकि वो अपनी जो लर्निंग है उसमें ना केवल जो उसकी क्षमता है, जो क्षमता है वो जैसे हम बोलते हैं ना प्रायर लर्निंग, तो वो तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी हो गई. देन बट वो जनरली सब में अलग अलग तरह की होती है, बट वो तो एक है ही कॉम्पिटेंसी उसमें कि वो किस तरह से कर रहा है, वो स्लो लर्नर है कि वो फास्ट लर्नर है. बट उसको आइडेंटिफाई करके उसकी लर्निंग मैच करके आप उसके लर्निंग हैबिट्स उसमें डेवलप करके, तो उसमें आप कितनी मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसी कम है या ज्यादा है तो उसको कितना ज्यादा किया जा सकता है, सोशल और इमोशनल कॉम्पिटेंसी को कितना ग्रो किया जा सकता है, जो उसकी मेटाकॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है कि वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि जो उसमें नॉलेज भरी है उसको कितना अप्लाई कर पाता है, वो चीजें आप कितनी और डेवलप कर रहे हैं. तो जब ये सब चीजें हम डेवलप कर पाएंगे तो वो ना केवल लर्निंग इसलिए होगी कि एग्जाम पास करना है, इसलिए होगी कि एक डिग्री लेनी है, बल्कि इसलिए भी होगी कि वो उस फील्ड का, उस चीज को अंडरस्टैंड, मेटाकॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी हमें यही समझाती है कि हम एक्चुअली में अंडरस्टैंड करें कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मोटिवेटेड रहें. और सोशो इमोशनल कॉम्पिटेंसी को जब हम लेके चलते हैं तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, जिससे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं. और जब इस तरह की लर्निंग होती है, जब इस तरह की लर्निंग होती है तो एक तो हम सेल्फ लर्नर बनते हैं, बिकॉज लर्निंग हमें खुद ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है. फिर हम जहां भी जाते हैं कुछ भी नया सीखने के लिए वी आर ऑलवेज ईगर. अब जैसे आज का ही आप ये वेबिनार लीजिए, देयर आर फ्यू ऑफ यू विल सी के ओके ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है इसके बारे में बताया जा रहा है. फ्यू ऑफ देम के पता नहीं क्यों बताया जा रहा है, ये क्या है. और फ्यू ऑफ यू विल डेफिनेटली कीन टू नो कि अरे अच्छा इसमें ऐसा भी कुछ है. when we talk about habit of learning, so there are some kind of a cognitive and metacognitive also, and आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे शायद, और उनमें से कुछ लोग बोलेंगे क्वेश्चन पता नहीं हम पूछें कि नहीं पूछें, और कुछ कहेंगे नहीं नहीं ये चीज कुछ पता चली है कुछ नहीं है. तो इसमें और क्या है, लेट्स जस्ट आस्क. They will write on the live chat box. Few of them will not write. So that's what I'm saying. So अपनी learning को अपनी habit में शामिल कीजिए, that you are acquisitive to learn new things. You are curious to know about your surroundings, about the new things that is happening. Only then ये जो concept अब नया आया है personalized learning का, flip learning का, और आपका सेल्फ लर्निंग का, वो सक्सेसफुल हो पाएगा. अदरवाइज वो कहीं ना कहीं जो है उसका सक्सेस रेट पूरी तरह से निकल के नहीं आएगा. उसका सक्सेस रेट आने का एक ही तरीका है कि हम लर्निंग को हैबिट बना लें, और लर्निंग को हैबिट बनाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी. जैसे कि बहुत पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वो प्रैक्टिस के लिए टीचर्स को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, और पेरेंट्स को भी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, और स्टूडेंट्स को तो समझना पड़ेगा. और फिर जब वो धीरे धीरे हो जाएगा तो अल्टीमेटली मास्टरी हो जाएगी, बच्चे की भी, स्टूडेंट की भी, और टीचर की भी. So the core 4 elements of personalized learning is integrated digital content, targeted instructions, data-driven decisions, and student reflection and ownership. जब ये चारों चीजें होती हैं तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, पर उसके लिए हैबिट ऑफ लर्निंग बहुत जरूरी है. और उसके लिए जैसे मैंने बोला टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर्स नो अ स्टूडेंट टिपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर व्हेन एड्रेसिंग अ लर्निंग चैलेंज and can analyze these habits using the 4 personal competency frameworks जिनकी हमने बात की है.
और उसके बारे में हम और ज्यादा बात करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, पहली कॉम्पिटेंस है, दैट इज कॉग्निटिव। जैसे मैं आपको कह रही थी, कॉग्निटिव जो है बेसिकली जो हमारी प्रायर नॉलेज है अबाउट एनीथिंग, अबाउट न्यू, जैसे जो हम पढ़ते हैं और रिमेम्बर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो विच इज देयर इन आवर माइंड, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, और वही वहीं से फिर हम अपनी न्यू लर्निंग पे आते हैं। बिल्कुल वैसा है जैसे मान लीजिए आपने एक नई चीज के बारे में पढ़ा एक क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो आपने पढ़ा वो तो है ही, उसमें थोड़ा एड ऑन है। तो अगर आपका एक बेस बना है जो जहाँ पे आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपको वो याद है, आपने उसको समझा है, अगर आपका बेस क्लियर है तो जो नई चीज आप समझेंगे वो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो cognitive skills, cognitive competency will give us a ground where we can go for a new learning. Cognitive understanding is ki how much we can hold in our brain, how much we can learn, what we know, our basic knowledge, our mental ability basically. And when we say metacognitive skills, so metacognitive skills is gaining new knowledge about your environment, about the learning, and how much जो भी आपके अंदर है उसको आप कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप उसको रिफ्लेक्ट कर पाते हैं in your thoughts and in your action and in the way of learning, that is metacognitive. और ये एक चार्ट भी है मेटाकॉग्निशन को समझाने के लिए। सो मेटाकॉग्निशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन। So when we say metacognition, knowledge is कि हमें कितना पता है जो हम जानते हैं, how much we know about what we are knowing and how can we express it, that is what metacognitive regulation is, कि हम उसको कितना अच्छे से explain कर पाते हैं। Then metacognitive knowledge में अलग अलग आते हैं ये, these are the research point of view. I'm not going to get into the detail of that, but what I'm trying to say is जब हम बच्चे को analyze कर रहे हैं as a faculty, as a teacher, so हमें ये understand करना है कि एक तो उसकी mental ability कितनी है, उस mental ability के साथ वो अपने आप को कितना अच्छे से express कर पाता है। When we say declarative knowledge, तो वो उसको कितना पता है कि जो उसको पता है उसके बारे में, और उसको वो कितना अपनी स्किल्स को कितना वो एक्शंस में ला पाता है, दैट इज प्रोसीजनल नॉलेज। एंड कंडीशनल नॉलेज इज कौन सी स्किल को कहाँ यूज करना है। मतलब कॉग्निटिव स्किल्स तो होती है हमारी मेंटल एबिलिटी, बट मेंटल एबिलिटी को किस सिचुएशन में किस तरह से यूज करना है, कब यूज करना है, दैट इज कंडीशनल नॉलेज। और उसके बाद उसको प्रॉपर प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, और ये देखते हुए कि वो कितनी हमारी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, these are all the things. So क्या स्टूडेंट में मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हैं, whether are they able to express themselves, are they able to express their own creative thinking, their own innovative thought process, whether they are able to do that. So that is metacognitive competencies and skills. So this is just an example to showcase the student metacognitive abilities, that is definitions, underpiping and benefits, then encouraging students to monitor and control their learning. So how, while preparing for an exam, while taking an exam, and after taking an exam, so उनको evaluate करके, उनको देख के कि वो कितना एक्सप्रेसिव वे में लिख पा रहे हैं। इट इज सिंपली ऐसा ना है, देखिए इसका अगर एक और सिंपल वे में मैं समझाऊं तो जनरली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि टीचर ने जो बता दिया, जो नोट्स में दिया हुआ है, ये ना केवल मैंने पैटर्न स्कूल एजुकेशन में देखा है, बल्कि कॉलेज में भी कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जो टीचर्स ने नोट्स दे दिए हैं, बस हमने उतना ही उसी में से लिख देना है जो जो लिखा हुआ है। अपना खुद से उसको क्या और नया इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें क्या नया ऐड किया जा सकता है, वो नहीं देखते। तो वो जो आप जितना आपको बताया गया और आपने वो याद कर लिया और उसको रिमेम्बर कर दिया और उसको लिख दिया, तो वो तो आपकी मेंटल एबिलिटीज हैं, बट उसमें आप कितना इनोवेटिवली, नया क्रिएटिवली अपना भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपना थॉट प्रोसेस आप उसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसमें दर्शा रहे हैं, दैट इज what your metacognitive skills is. So it is self-regulation of learning and using learning strategies. Then the third component, third competency जो समझने वाली है, जो जनरली जो हमने चार की बात की, तो मैंने आपको बताई, that is motivation.
सो इसमें एक विल टू स्किल की साइकिल बड़ी अच्छी है कि अगर बच्चे में विल होगी, मोटिवेशन होगा, तभी वो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी या स्किल को गेन कर पाए। तो ये भी बहुत जरूरी है to have a motivation. When students have academic will and skill, and their education journey is much more enjoyable and successful. So हमें ये देखना है that our student की जो motivational competency है वो कितनी है, whether it is more meaningful in classroom, whether they are involved in the activities of classroom, how much they are accountable, competencies, all these things matters a lot. And then social and emotional competencies के एक सिचुएशन में बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है, अपने पीयर मेट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, अपनी टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, ओवरऑल कॉलेज अरीना में उसका बिहेवियर कैसा है, पेरेंट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, और उसका जो एक थिंकिंग प्रोसेस है टुवर्ड्स सोसाइटी या सोशल थिंकिंग प्रोसेस या सोशल बिलोंगिंगनेस वो किस तरह की है, तो वो सोशल और इमोशनल कॉम्पिटेंसीज में आता है। और जब हम इन सबको एक बार समझ लेते हैं, एक बार बच्चों में देख लेते हैं, देन वी कैन गिव ये चारों अभी जो मैंने आपको कॉम्पिटेंसीज बताई, तो उसमें से वी कैन देन एनालाइज, एंड वही फिर बात आती है जब हम ये चारों चीजें कर लेंगे तो हमारी ये फिर से साइकिल पे हम आ जाते हैं, प्रोसेस साइकिल की जो हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया। जब आप ये चीजें एनालाइज कर लेंगे तो आप फिर उनकी लर्निंग हैबिट्स को उनकी स्किल मैचिंग के अनुसार कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज उनमें ज्यादा है, मेटा कॉग्निटिव ज्यादा है, मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, या सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन देन develop the learning habit matching their skills, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें और इम्प्रूवमेंट करते हुए उनको क्लास, जैसे अगर सपोज कोई स्टूडेंट का सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसी ज्यादा नहीं है, तो उसको उस तरह के रोल प्लेज देकर, केस स्टडीज देकर, सिचुएशंस देकर, peer mates के साथ groups बना के, there are lot many things that we can do for a student if we know what exactly he or she is lacking into. और यहीं पे आजकल डिजिटल एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ वेबिनार्स में बताया था कि आजकल के जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बने, उसमें यू कैन आइडेंटिफाई कहाँ पे हमारा स्टूडेंट लैक कर रहा है और उसको किस चीज के लिए हेल्पिंग हैंड की जरूरत है और किसमें उसको ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और उस तरह से फिर जब हमें वो पता चल जाता है, देन वी कैन वर्क ऑन टू दैट एंड देन वी कैन इम्प्रूव दैट, एंड देन हम उसको उस चीज में भी मास्टर बना सकते हैं। और जब जो स्किल उसमें है उसको तो वो तो उसमें है ही, और नई स्किल्स जो नहीं है वो जब हमें पता चल गया तो एज अ टीचर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो उसके अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, उसकी हैबिट में ला सकते हैं, और वो लर्निंग उसको दे सकते हैं, लर्निंग हैबिट्स उसमें डेवलप की जा सकती हैं, एंड देन with all the skills and knowledge he or she can become the master. So इस तरह से आप learning habits develop एक as a teacher अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में या डिजिटल मोड से भी स्टूडेंट्स के लिए आप कर सकते हैं थ्रू एक्टिविटीज, through various tests, and through observations also and interaction also. और इसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि ये टीचर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दिस इज द क्रिटिकल रोल ऑफ अ टीचर to help the student building these learning habits and apply them in multitude of familiar and unfamiliar situation. Because जब कोई सैपलिंग ग्रो कर रही होती है, अगर उसको तब ज्यादा नर्चर किया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, बजाय कि जब वो बड़ा हो चुका है और उसने जो भी सीखना था, जो समझना था, और जिस तरह से उसको ग्रो किया गया, तो वो जो किया उस समय, उसके बाद उसको और इम्प्रूव करना, मैं ये तो नहीं कहूंगी नामुमकिन है, बट कंपैरेटिवली मुश्किल हो सकता है। बट अगर वही चीज आप बहुत शुरू से, जब हम नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी की भी बात करते हैं और नए एजुकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम हैबिट ऑफ लर्निंग को समझ सकें और उसमें टीचर्स का रोल समझ सकें एक एजुकेशन के लिए। और एज ए इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो बहुत आसान है हमें ये समझना कि लर्निंग हैबिट्स, जैसे हमने शुरू में डिस्कस की कि क्या क्या है, बट एज अ टीचर if you are listening and you are understanding the concept, I would like to say understand your child first, understand the student first, and the skills and the competency that they are having, their learning styles, and try to match uh, the learning with their skills, and try then to develop other important skills. And 4 skills we have to keep in mind to make a holistic personality or holistic learning happening, global citizenship when we are talking, and global education happening. And that is, one is cognitive competencies, metacognitive competencies, and then is our, if anybody can just write on the live chat, what else? Cognitive, metacognitive, motivational, and the, what is the 4th one? Emotional and social learning. So ये 4 चीजें अगर हम अपने स्टूडेंट्स में डाल देंगे ना, तो जो लर्निंग हैबिट्स हैं वो उनमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। एंड देन ये जो पर्सनलाइज लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, ये बहुत आसान हो जाएगी। और यही है मेन क्रक्स ऑफ टेलिंग यू टू डेवलप हैबिट्स ऑफ सेल्फ लर्निंग। And then I can just say that we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but an habit. आप किसी चीज को रिपीटेडली जब करते हैं तो वो आपकी हैबिट में शुमार हो जाता है और एक्सीलेंस तभी आ पाती है। So to all teachers, to all educators, this is my humble request that you are doing lot many good works for your students, for your own self, for your institutes, for your college, for your education setup. Do more, never stop it, do continuously keep it doing. Even if somebody is saying that what are you doing, why are you doing this, what will give you, what it will give you, it is not coming in your maybe your financial structure that has been given, still do it, because you are doing it for the future and the present of Mother Earth, for the children's, for the citizens of our country and across the globe. And you are doing it for the students, those who are looking on their teachers. So you have to do it. We all have to do it for ourselves also, and for the students also, and for the welfare of the society also. Because एक अच्छा समाज बनाना बहुत जरूरी है। पढ़ाना जरूरी है, पर पढ़ाने से भी ज्यादा जरूरी है ये समझाना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और पढ़ के हमें क्या करना है, और सही दिशा क्या है। सही दिशा होगी तभी सही दशा बनेगी और तभी सही समाज बन पाएगा। नहीं तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो जिनका नेगेटिव माइंडसेट होता है और जो नॉन सोशल एक्टिविटीज करते हैं वो शायद बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, मे बी इंजीनियर्स, और कई बार ऐसे लोग भी इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो 4 चीजें ना, जो हैबिट ऑफ लर्निंग है, वो शायद नहीं डेवलप की, वो सेल्फ लर्नर्स नहीं बन पाए सही मायनों में, और उनकी थिंकिंग को मिसमैच कर दिया गया। तो वो सब ना हो, हमारा स्वस्थ और अच्छा समाज बने जहाँ पे सब हेल्दी लर्नर्स हो, सेल्फ लर्नर हो और हैबिट ऑफ लर्निंग सीख पाए, पॉजिटिव लर्निंग, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ।
बना पाए और अपनी स्किल सेट और अपनी कॉम्पिटेंसीज को सही डायरेक्शन में यूज करें। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, आई जस्ट वांट टू से व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आप अपने सजेशंस हमें ईमेल पे जरूर दीजिएगा कि आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन, ये वेबिनार, ये थॉट्स कैसे लगे, और आप और क्या जानना चाहते हैं, किन विषयों पे हम बात करें, कोई कुछ भी आप अगर जिसके बारे में सुनना चाहते हैं, just keep write to us on the given email ID, or you can send us your suggestions on the given WhatsApp also. So with this, very good night in India, and a very greetings for the different time zones across the globe. Stay healthy, stay fit, stay blessed, and be positive. We'll meet tomorrow, same time at 8 p.m. Indian time.